अब क्या है, आपने ट्वेल्थ में डिसाइड किया आप आकाश में क्लासेस में नहीं जाएंगे, घर पे बैठ के यूट्यूब से पढ़ेंगे। तो स्केड्यूल क्या होता था घर पे अपने आप बैठना इज अ टफ थिंग, एंड ही वाज पार्ट ऑफ योर नीट प्रेपरेशन एवरी डे। Every day, every day. He was. If he would not have been a part of this, I would not be here right now with this rank. That is for sure. द नेम इज श्री गोपाल अग्रवाल, दैट्स हिज फादर्स नेम। एक्स्ट्रॉर्डनरी। हमारे साथ देवेश श्री गोपाल अग्रवाल हैं, हैदराबाद से हैं। देवेश का स्कोर है 690। जबरदस्त स्टोरी है, एंड हिज ऑल इंडिया रैंक इज 123, 123। सो देवेश, सबसे पहले ये बताइए कैसा लग रहा है? I feel wonderful. NEET is finally over. NEET, re-NEET, everything is over. So I'm happy, joyous. It's all finally come to an end. All my hard work has paid off. ऑल योर हार्ड वर्क हैज पेड ऑफ। इंटरेस्टिंग रही है आपकी जर्नी। आपने 11th के अंदर मोशन का फ्रेंचाइजी था हैदराबाद में जो स्टार्ट हुआ, उसे ज्वाइन किया। इन 12th यू मूव टू आकाश बट नेवर वेंट देयर फॉर क्लासेस। घर पे बैठ के यूट्यूब से पढ़ाई की। टारगेट बैच से 40,000 क्वेश्चन सॉल्व किए। तो इस सब टॉपसी टर्वी के अंदर यू नेवर लॉस्ट योर डायरेक्शन, योर पाथ, इट वाज ऑलवेज इन कंट्रोल। Yes, sir. It was always there. I mean, I did not lose my path because NEET was my final goal. NEET was the end goal, but you always make smaller goals in the way that tell you that you're going on the right path. So always try to hit that smaller goal and you know that you are going in the right direction. तो मुझे ये बताइए कि व्हाट हैपेंड। 11th आपकी अच्छी तरह हो गई थी मोशन के साथ, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ? हाँ सर, 11th मोशन में मोशन जो फ्रेंचाइजी यहाँ पे ऑपरेट हुई थी, द इट वाज द टीचर्स वर एक्सीलेंट इन माय ओपिनियन। टीचर्स बहुत अच्छे थे हमारे, दे वर वेरी वेरी सपोर्टिव। तो टीचर्स के साथ आई हैड अ वेरी गुड बॉन्डिंग एंड दे वर आल्सो वेरी हेल्पफुल। उनका टेस्ट का प्रोग्राम वाज अ लिटिल वीक इन माय ओपिनियन। वो थोड़ा सा टेस्ट के साथ दे वर लिटिल inconsistent with the test, let's say, let's put it that way. But other than that, it was a good experience, very good experience. Now, motion moved to some other location. Yeah, That so the location, campus was actually very close to my house. It was right beside. It was almost the next building. It was that close. So my major reason for joining there was that the teachers were very good and the travel time was almost zero. It was actually zero only. I just had to go like 100 meters and then come back. So because yeah. I would save all that travel time and everything, is which is why I joined motion in 11th. And it moved away almost 70-80 kilometers to the outside of Hyderabad. They started a fully hostel-based system, which I was not. That was completely opposite to what I wanted to do. I was totally at self-study, stay-at-home type of person. आपने 12th के अंदर आकाश ज्वाइन कर लिया, एंड देन यू डिसाइडेड टू नॉट गो टू आकाश एट ऑल। कोई क्लासेस अटेंड नहीं की, घर पे बैठ के यूट्यूब से पढ़ते थे, ये कैसे हुआ? So एक्चुअली ऐसा हुआ था कि मोशन में जब मैं था, सो आई वाज मैंने सिलेबस कवर कर लिया था काफी सारा ऑलरेडी अहेड का। सो आई न्यू अगर मैं आकाश भी जाता तो इट वुड बी अ वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि मैं वही सिलेबस फिर से पढ़ने बैठता फालतू में। आई वुड बी अटेंडिंग क्लासेस व्हिच ऑफ सब्जेक्ट्स दैट आई ऑलरेडी स्टडीड, व्हिच आई ऑलरेडी फिनिश्ड। सो आई रादर चूज टू कंटिन्यू फ्रॉम वेयर आई लेफ्ट. So that in that aspect, which is why I told Akash that I don't want to attend your classes, and I will come for the tests. I attempted all the tests in Akash, but I told them that the classes won't make sense for me because I already finished a part of the syllabus ahead. And I found it much easier to stay at home and study. To be honest, self study was very very easy for me. It came easily to me. तो वो चीज़ अब आपसे समझेंगे, इट इज़ क्वाइट फिनोमिनल। तो एक एक करके चल रहे थे, आपने यूट्यूब से पढ़ाई की। आपको Yes. फिजिक्स के टीचर जो मोशन में थे, उनका नाम गिरीश आचार्य सर है, वो आपको आके पढ़ाते भी थे। तो केमिस्ट्री आपने कहाँ से पढ़ी यूट्यूब पे? केमिस्ट्री मैंने जो मोहित यागी सर है, उन्होंने शुरू किया था कंपटीशन नाम का जो था। सो उन्होंने फ्री लेक्चर्स डाले थे अपने केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स के फ्री लेक्चर्स उनके यूट्यूब चैनल पे थे। सो आई फाउंड देम आउट एंड रिकमेंडेड देम टू मी, एंड देन आई स्टार्टेड स्टडिंग फ्रॉम देम। एंड वो लेक्चर मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। आई मीन दैट इज व्हाट ओपन दैट ऑलमोस्ट दिस सॉर्ट ऑफ लव फॉर केमिस्ट्री। मैंने आगे जाके फिर केमिस्ट्री का ओलंपियाड वगैरह भी लिखा, क्योंकि आई फाउंड दिस लेक्चर्स इज फिनोमिनल. What I'm going to do is, I know Alok sir and NR sir really well. I'm going to arrange your interview with them as well. Oh, So please, Alok sir, please, sir. I would love to meet them. I mean, it'd be a dream come true. मुझे ये पता so है कि वो जयपुर में शायद करते हैं they're ना. based in Jaipur. So I'm also Yes, originally from Jaipur. So I right. just Okay. met them when I'd gone there, and we are now also collaborating with competition to run the JEE test series in our partner centers all over the country. So that is Okay. very good. Alok sir and NR sir for chemistry. Whom did you study physics from on YouTube? Physics on YouTube was physics वाला के old lectures, अलग पांडे sir old lectures. अलग पांडे सर के पुराने वाले लेक्चर देखिए। एंड बायो? Bio, sir. Bio for me was I finished a large part of it in motion only. So I had my teacher was Salvin ma'am. Motion में मुझे पढ़ाती थी, and she helped me cover the rest of the syllabus in this 1 or 2 months in the initial parts where I was in Akash. So home study से she used to take lectures only, and then we finished bio. तो फिजिक्स के अंदर you also took classes from Girish sir besides watching lectures of physics वाला. So what was Right. the So take for that? physics वाला का lectures sir were mostly to maximize on the theory part. Physics wala I felt explained theory extremely well. It was the easiest way to grasp physics theory I felt was from Alak Pandey sir's old lectures.
गिरीश सर वाज वेरी स्पेशल इन द सेंस दैट गिरीश सर आपको फिजिक्स सम्स कैसे कराना ना वो सिखा देते थे. He ओके taught me the most, he found the best ways to explain applicative physics. All these questions, he had these massive banks of questions with him. He's been a teacher, he's been in this field for a very long time, तो उनके पास बहुत सारे questions होते थे. वो ना physics, वो ऐसा कहते थे कि study the subject because you love the subject. Forget the exam for once and study physics. Physics पढ़ो, like in physics करो. So under him is when I started doing HC Verma. उन्होंने कहा you have to do it. उस टाइम पे नीट के बच्चों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं था. जैसे 11th में जब मैं था तो 2025 का पेपर तब आया नहीं था. सो वी डिड नॉट हैव दैट हार्ड डिफिकल्ट फिजिक्स का कॉन्सेप्ट. फॉर अस नीट फिजिक्स वाज सपोज्ड टू बी वेरी इजी थिंग एंड दिस एंड दैट. सो एचसी वर्मा वगैरह वाज कंसीडर्ड यू आर पुशिंग द लिमिट्स कि हाँ ठीक है आपको शौक है इसलिए कर रहे हो, बट एचसी वर्मा के लेवल के क्वेश्चंस आएंगे नहीं कभी. बट ही टोल्ड अस दैट यू हैव टू डू इट. यू वांट टू मास्टर फिजिक्स और लर्न फिजिक्स में करो. तो वो फिजिक्स एचसी वर्मा के क्वेश्चंस कराते थे, पुराने जेई के क्वेश्चंस कराते थे. सरप्राइज ऐसे ही पुराना एडवांस के क्वेश्चन एक बार दिखा देते थे हमें. बोलते थे अटेम्प्ट करो, कोशिश करो, देखते कहाँ तक पहुंचोगे, क्या करोगे. सो ही वाज लाइक दैट. ही इज अ वेरी फिजिक्स लविंग पर्सन सॉर्ट ऑफ काइंड. तो एक्सेलेंट. तो आपने टारगेट बैच से क्वेश्चन प्रैक्टिस किया 40,000 क्वेश्चंस. व्हाट डिड यू लाइक अबाउट टारगेट बैच? for me target batch had a very nice system, sir. It was you could choose chapter wise किस level के questions चाहिए. You could decide on that which chapters you wanted, and then there was, you can bookmark the question, you can highlight what you made mistake in, you can find out what people like. I still remember the bookmarks had mistakes the previous kids had made. It shows a list of why this question went wrong, and there were Yeah. highlights on why. And there were so many times I realized that I made the same mistake as majority of the public, because whatever mistake, the reason behind my mistakes was always mentioned in that list. किसी ना किसी ने वही गलती मेरी तरह दोहराई थी उसमें. इट वाज ऑलवेज अ हाईलाइट कि हाँ दिस मिस्टेक इट्स अ कॉमन ट्रैप. लाइक इट शोड मी कि ये गलती होना इज अ कॉमन ट्रैप, बट डोंट फॉल फॉर दीस थिंग्स. और आपने कस्टम टेस्ट और डीपीपी जनरेटर वगैरह भी यूज करते थे? नॉट दैट मच. Not that much. I had tried custom test at one point. So when I finished chapter wise questions वगैरह bio के कुछ chapters के लिए, so I tried the custom test and all of that. But उस point पे फिर I mean by the time I had finished all of this, I had come to the later part of my NEET part. So वहाँ पे question test वगैरह बढ़ गई थी. So slowly my use of the questions alone had slowly dropped from NEET prep at that point. और आपने सारे जो पीवाईक्यू पेपर्स वगैरह एग्जिस्ट करते थे Yes, I कागज पे finished सब. every single previous year paper. अब क्या है, आपने 12th में डिसाइड किया आप आकाश में क्लासेस में नहीं जाएंगे, घर पे बैठ के यूट्यूब से पढ़ेंगे. तो स्केड्यूल क्या होता था घर पे अपने आप बैठना? इज अ टफ थिंग. सो एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई थिंक. जब मैंने आपसे बात किया इंटरव्यू से पहले तो इट सीम लाइक अ पीस ऑफ केक फॉर यू, बट लेट अस It was एक्सप्लेन not a व्हाट. piece of cake. Abhi, when I look back at it, it seems like, yeah, it's over. When I was doing it personally, it was very gruesome. तब मुझे लगता था, this is not happening, that is not happening. So during the journey, you will always find it very difficult. But at the end, it feels very satisfying कि आपने ये सब कर लिया. श्योर. तो एक एक करके चलते हैं. व्हाट टाइम डिड यू स्लीप एट नाइट? So I slept between 9:30 10. Between this time, I व्हाट was टाइम asleep. व्हाट टाइम वुड यू गेट अप इन द मॉर्निंग? I would get up around 15-20 minutes before 5, 4:45 or 4:30 से 4:45 के बीच में. व्हाट वुड यू डू देन? I used to get up, brush my teeth, mood hota tha, and then I would start studying from around 5, 5:10. And matlab, around 5 was when I started studying. And I usually started with reading bio ke chapters. Because it was, I remember my dad used to tell me this thing, it was called Eat the Frog. Apparently there's a principle like that in engineering. So my bio was actually my worst subject. क्योंकि मैं एक पॉइंट पे आके वो बार बार एनसीईआरटी पढ़ने से थक गया था. आई डिडंट लाइक टू रीड इट अगेन एंड अगेन. सो लाइक टू डू दैट फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग. सो आई स्टार्टेड विद रीडिंग bio. You started with reading bio. Okay. Then what did you do? How long did So you read bio? bio padna, and then chemistry I used to read. This is reading as in I used to open my textbooks, reading my textbooks, writing down important points. I wrote down important points while reading. So whatever the tables in the chemistry books or orders or whatever it was, I used to write them down simultaneously while reading. So my first 2 hours in the morning was usually reading chemistry and reading bio. I mean reading bio and chemistry. Okay. So it's After 7 o'clock. What would you do at 7 o'clock? so 7 to 10 would be my lectures. So I would attend lectures, physics, chem, whatever. Bio ke lectures, I was not really, I mean, it was very initial, in the very initial phases only was I doing bio lectures. Slowly that got swapped out for more physics and chemistry to cover the syllabus faster. But it was lectures. Perfect. So now it's 10 o'clock. 10 बजे तक आपने लेक्चर देखे हैं, 5 घंटे पढ़ लिए. Then what would you do? So 10 o'clock would be my big break. I would get up, go take a shower, because if you studied for 5 hours, now you feel a little sick of them, sick of the books and everything. So you get up, take a shower, you feel fresh again. So take a shower, have breakfast, take a little, like a long, decent break. Almost 10 to 11 was my break. And then I would come back and start studying from 11. Okay. 11 बजे से आप क्या करते थे? 11 to around 1 or 1, I used to practice questions most of the time. It was chemistry and physics questions. फिर 1 बजे क्या किया?
1 बजे उठ के इट वाज लंच ब्रेक। लंच ब्रेक मतलब लंच के लिए उठो, लंच वंच खाओ, थोड़ा बहुत वॉक करो, बातें करो पेरेंट्स फैमिली वगैरह के साथ, एंड देन आई यूज्ड टू कम बैक अराउंड 1:40 1:45 के आसपास। आई यूज्ड टू कम बैक टू स्टडी। ठीक है, फिर 1:45 पे क्या करते थे? From then I started my questions. Then it was lectures and questions in that time from 1 to 4. Mostly lectures कर रहा था, उसके बाद फिर questions करता था। 1 to 4 तो लेक्चर्स हो गए, व्हाट वुड यू डू एट 4 o'clock? 4 o'clock से 4 o'clock was a break. 4 o'clock I used to get up. It was like the evening time हो गया तो एक बार उठो, half an hour का। It was just usually just like half an hour break. Get up, eat something, or just spend some time. It was get out of that studying. ठीक है, तो आधा घंटे का ब्रेक हो गया। 4:30 से क्या करते थे? 4:30 से 7:30 मुझे याद है 3 घंटा, जिसमें इसमें या तो जैसे मतलब मेरा शेड्यूल आपको थोड़ा सा वॉन्की लगेगा बिकॉज मैं हर चीज रादर गोल बना के करता था कि इस दिन में ये सब खत्म हो जाना चाहिए। तो अगर कोई लेक्चर का पार्ट बचा हुआ है तो वो करो, या फिर क्वेश्चंस बचे हुए हैं तो वो खत्म करो। ये सब चलता था मेरा, एंड देन लास्ट में आई यूज्ड टू सिट विद माय फादर एंड चेक ऑल माय मिस्टेक्स ऑफ द एंड ऑफ द डे, कि जो भी क्वेश्चंस किए हैं वो सब हम फिर आंसर की के साथ मैच कराते थे। कितने बजे हो रहा है ये? 7:30। तो 5 hours in the morning, 2 hours, 11 to 1, 7, यस। 2.5 hour, 1:40 to 4:30. So we are 9.5 hours, and another 2.5 hours from 4:30 to 7:30, 3 hours. और 3 आवर्स। Around 12 to 13 hours every day. हाँ हाँ, अराउंड 11 to 12.5 आवर्स के बीच में आई वाज स्टडी। Zero gadget time, no time on social media, nothing. आई डिड नॉट हैव इंस्टाग्राम वगैरह, बट इट वाज नॉट लिटरली जीरो गैजेट टाइम। मैं थोड़ा बहुत जैसे अब ये जो ब्रेक्स मैंने आपको बताए हैं, इनमें अगर मैं 15-20 मिनट अगर कुछ देख रहा हूँ तो इट वाज ओके। इट वाज नॉट जीरो जीरो। What was the role of your dad in this preparation? So my dad played probably the biggest role in this preparation. I mean, he had a role that I will not be able to put up properly in words, because मैं जहाँ भी I felt myself low या कुछ missing, Papa was there. He was always there to cover up for whatever mistakes I was making. फर्स्ट पेपर में कम नंबर आए, आई डोंट फील लाइक स्टडीइंग एनीमोर, ही वाज देयर टू गाइड अस कि नहीं, पढ़ते रहो लाइक दिस। जितने भी सेटबैक्स हुए होंगे, इफ देयर वाज समबडी टू गेट मी आउट ऑफ दैट डंप की दिस इज नॉट वर्किंग आउट द वे आई वांटेड इट टू, इट वाज ऑलवेज दैट। सो मेरी किताबें कौन सी रेफर करनी चाहिए, आपने कितने टेस्ट देने चाहिए, ही वाज वेरी फोर्सफुल एट द एंड कि आप टेस्ट दो और टेस्ट दो, जितनी हो सके उतनी टेस्ट दो। आई नेवर फिगर्ड आउट इट वुड हेल्प मी आउट इन दिस वे, बट या एट द एंड ऑफ द डे इट वर्कड आउट। करते वक्त बहुत कभी कभार लगता था दिस इज पुशिंग द बाउंड्रीज, बट doing it really helped me out. So my dad made a lot of these decisions for me. हम लोग बैठ के साथ में टाइम टेबल बनाते थे कि आप अगले दिन के क्या गोल्स होने चाहिए, ये खत्म करना है, एंड ऑल ऑफ दिस, एंड इवन ऑल द चेकिंग एवरी डे आई यूज्ड टू सिट विद माय डैड टू डू दिस चेकिंग। दिस चेकिंग वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वी यूज्ड टू डिस्कस क्वेश्चन क्यों गलत हो गया दैट्स अ डिफरेंट मैटर, व्हाई डिड यू मेक इट रॉन्ग। फिजिक्स वगैरह होता था तो क्या अप्रोच थी, ये करने की जगह व्हाई डिड यू गो द अदर वे। सो वी हैड इट वाज ऑलमोस्ट लाइक अ फिलोसॉफिकल, आई मीन पूरा ऐसे इंटेलेक्चुअल डिस्कशन ऑन दैट प्रॉब्लम कि क्यों क्यों किया था। आई मीन ही कुड नॉट कीप अप नेसेसरली विद ऑल द सब्जेक्ट्स, ऑब्वियसली उन्हें इतना नहीं आता था, बट ही वाज ऑलवेज देयर टू टेक पार्ट इन दैट डिस्कशन टू फिगर आउट कि मैं क्या कहाँ गलत कर रहा हूँ। सो पापा वाज ऑलवेज And he was part of your NEET preparation every day. every day he was, if he would not have been a part of this, I would not be here right now with this rank, that is for sure. The name is Sri Gopal Agrawal. That's his father's name. Extraordinary. So students, आपके सामने we have Devesh Sri Gopal Agrawal. Rank है 123, score है 690. He is from Hyderabad. You heard the complete story. एक चीज जो आप पिक कर सकते हैं, खासकर a lot of students who are planning to drop, prepare for NEET again for 2027, planning to study by yourself. He has given you a rigorous schedule of what a typical day can look like, right? You will have to put in hours, 10 से 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, but this is how you can do a mix of theory, question practice, and obviously Sunday would be test day. Sunday was test day, Tuesday was test day, so whenever it was test day, question hours would get compromised, and that was totally okay. Question hours will get compromised. Question hours or lectures, I mean the goal of that day would then be incorporate that test. So जो थोड़ा बहुत उधर इधर होता था तो वो अपने आप that is why I was saying I always did it by goals, like you finish these tasks for the day. So when it happened was more or less my choice. It had a pattern, but ऐसे choice थी आपकी कि आप कब करो but खत्म करो. So students, आपके सामने देवेश श्री गोपाल अग्रवाल है from Hyderabad. Fantastic performance. Thank you so much, Devesh, for this interview. I hope students watch it again, pick up some of the things that you have talked about, apply it in their preparation, and I'm sure it is going to be super helpful for them. Thank you, Devesh. Thank you so much.